Hello children, we are back with yet another video which will benefit you a lot. आपका मनपसंद और चहेता लाइट। जी हाँ, ये लाइट की पहली वीडियो है जिसमें आपको लाइट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बातें सीखी जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज लाइट? जी हाँ, लाइट 6th में भी पढ़ते हैं हम, 7th में भी, 8th में भी, 10th में भी, 11th और 12th में भी। सो ये लाइट है क्या? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। That gives us a sensation of vision। मतलब ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। जी, और ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ meters per second, which is really very fast। वैसे तो लाइट की 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड RAT, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। पर आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन की बातें करेंगे। So let's get started as to knowing as to what is reflection. Reflection is the process of sending back of light ray in the same medium from which it falls on the surface of an object, and it is called the reflection of light। मतलब अगर एक ray of light, जैसे हम इसे incident ray कहते हैं, the light that is incident on an object is known as the incident ray। So the incident ray will get reflected back। ये उसी मीडियम में वापस भेज दी जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। तो ये इंसिडेंट रे है, रे जो आ रही है ऑब्जेक्ट पर, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, द रे विच गेट्स हिट बैक बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक। राइट? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने अपने कैलकुलेशन के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द डॉटेड इमेजिनरी रे नोन एज द नॉर्मल। याद रहे, नॉर्मल लाइट नहीं बनाती, ये हम बनाते हैं अपने स्टडी पर्पस के लिए, और वी मेक इट एट 90 डिग्री। We make it at 90 degree to the surface where the light is incident। अब एक बार इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये जो लाइट आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये यहां पर इंसिडेंट है, सोचिए ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज आवर नॉर्मल। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल I और एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle made by the reflected ray and the normal is known as the reflected ray, right? So we call this as angle I and angle R. So what is ray of light? When we consider for our study purpose a single ray of light hitting a particular opaque object, so ray of light, it is a single narrow path of light, right? It is a single narrow path of light. So what is beam of light? Beam of light is collection of several rays of light, and it is called as the beam of light. Now as we had discussed this is the incident ray, this is the reflected ray, and in between we have drawn a normal at 90 degree. The normal is not at 90 degree to the incident ray, it is at the point of incidence
90 degree to the surface on which it is incident, right? So let's discuss the terms that we are using. Usually children do not define it correctly. Incident ray, the ray of light coming from a source that falls on a surface is called incident ray. So जो लाइन इंसिडेंट हो रही है या फॉल कर रही है एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर. Reflected ray, the ray of light that gets reflected after striking the surface is called reflected ray. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पर. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपने स्टडी के लिए बनाई है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. Laws of reflection. These are very important irrespective of whether you are in 6th, 7th or 8th. You should know the laws of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle I is always equal to angle R, and it holds true for all surfaces, right? So angle I is equal to angle R. The second law says that the incident ray, the normal and the reflected ray all lie on the same plane. The incident ray, reflected ray and the normal all lie on the same plane. Now, some questions that usually come with respect to these laws that you have studied, especially the angle I is equal to angle R formula. What is the angle of incident of a ray if the reflected ray is at angle of 90 degree to the incident ray, right? So what is it saying? What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? So it is saying that this angle is 90 degree. So how much is angle I? So it is saying reflected ray, it is at an angle of 90 degree to the incident ray. मतलब incident ray और reflected ray के बीच में angle 90 degree का है. तो angle I और angle R क्या होंगे? So we all know that angle I is equal to angle R. Let me take a brighter pen for you. So angle I is equal to angle R, right? So we all know that I plus R in this case is 90 degree, and because they are both same, angle I equal to angle R is equal to 45 degree, क्योंकि ये दोनों same है, right? So it was easy. Let's look into the next question. The incident ray makes an angle of 65 degree with the surface of the plane mirror. याद रहे, it is not the incident angle. Incident angle is the angle made with the normal. ये angle वो किसके साथ बना रहे हैं? What is the angle that it is making? It is making it with the surface of the mirror. So this angle, which is also known as the glancing angle of incidence, is 65 degrees. Right? Now they are asking the angle of reflection in this case will be, they are asking you this angle, which is angle R. Let's find it out. Now if this is 65, angle I is nothing but 90 minus 65. And angle R is also 90 minus 65. Right? क्योंकि ये 65 plus I is 90, right? Normal is made at 90 degrees to the surface. So ये दोनों मिलाकर 90 degree होते हैं और 65 अगर हम 90 से घटा दें, that is what you will make your angle of incidence. So it is 90 minus 65. Right, children? So it is 25 degrees. Now let's look at the next topic, which is the plane mirror. हम अपने आप को इतना रेगुलरली प्लेन मिरर पे देखते हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं कि ये काम कैसे करता है. हाउ डज अ प्लेन मिरर वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन मिरर इज परफेक्टली ओपेक. प्लेन मिरर is perfectly
ओपेक मतलब आने वाली सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, राइट? आने वाली सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सपोज दिस इज द रे ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और ये यहाँ वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. दिस इज वेयर यू आर टेकिंग अ लुक एट इट, राइट? सपोज दिस इज वेयर यू आर टेकिंग अ लुक एट इट, राइट? सो ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा कर आ रही है मिरर से, पर आप इमेजिन करेंगे कि ये मिरर के दूसरी तरफ जाकर कहीं मिल रहे हैं. The two rays after reflection are meeting behind the mirror. This is what your brain will assume it to be, and you will see an exact picture, this image standing behind the mirror. It is a virtual image. तो जैसा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वैसी इमेज बनेगी और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगी. अगर ये ऑब्जेक्ट x मीटर आगे खड़ा है तो ये इमेज भी मिरर के पीछे x मीटर पर खड़ी होगी. इट विल बी अ इरेक्ट इमेज. वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. इट विल बी अ इरेक्ट इमेज. जैसा ये सीधे खड़े हैं तो इमेज भी विल बी इरेक्ट. ओके, let's see the properties of the image formed by a plane mirror. Image is of the same size. So image formed is of the same size, right? It's not कि आप बड़े दिखेंगे या छोटे दिखेंगे. It would be of the same size and it would be same distance behind the mirror as the object is in front of it. यानी अगर आप 1 मीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी 1 मीटर पीछे फ्रॉम द मिरर, 1 मीटर फ्रॉम द मिरर खड़ी होगी. यानी आपके और इमेज के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर्स होगी, राइट? द इमेज इज इरेक्ट एंड अपराइट. इरेक्ट और अपराइट यानी अगर आप सर के बल खड़े तो इमेज भी सर के बल खड़ी है, पर इफ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट द इमेज विल ऑल्सो स्टैंड अपराइट. द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ऐसे ही लिखना चाहिए. दिस इज अ की वर्ड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. Let's take a question on the same. An object 10 centimeters high यानी 10 centimeters लंबी object है, is placed at a distance of 50 centimeters from the plane mirror. The size of the image will be. Now the size of the image will not change. It will remain the same. It will be 10 centimeter high. This is a trick question. आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, पर the size of the object will not change. Image formed by the plane mirror is always virtual. Virtual image होती क्या है? Virtual image वो image है जो actually it is not forming because the light is actually meeting, right? It is forming behind the mirror. अगर आप behind the mirror एक screen लेके खड़े हो जाएं तो आपको वहाँ पर कोई image नहीं नजर आएगी. That is, you cannot obtain this image on a screen, right? So it is a virtual image. The reflected ray are actually not meeting and so it cannot be captured on a screen. It will always be virtual and it will always be erect. Types of reflection. There are 2 types of reflection, regular reflection and diffused or irregular reflection. Now look at this. There is a parallel beam of ray that is falling on a perfectly nice surface, right? This is a parallel beam of ray falling on the object and being reflected parallelly. So in a regular reflection, parallel beam of light falls on a perfectly polished object and is reflected parallelly. But here the parallel beam of ray of light is reflected in zigzag manner or it is not reflected parallelly. This is because look at the surface. The surface is not polished or smooth. तो क्या अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है तो लाइट की गलती है? क्या लाइट ने अपनी रूल को मानना छोड़ दिया? क्या एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर? इट इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. इट इज जस्ट दैट दी surface is not even. ठीक है?
Let's look at this, the difference between regular and irregular reflections. A parallel beam of light incident on the perfectly polished object will be reflected parallelly. A parallel beam of incident light is reflected in different directions in zigzag manner. It takes place from a smooth surface, that is a plane mirror, highly polished metal surface, or still water. But it takes place, diffuse reflection takes place on a rough surface. All the regular surfaces usually are rough. All the things that you see around you are usually rough, like a wall, cardboard, unpolished materials, right? All rays are reflected at the same angle, hence they are parallel. Each ray is reflected at a different angle. Now mind you, it does not mean that angle I is not equal to angle R. This only is trying to say that for every incident angle, the angle of incidence itself will be different. Now look at this. If this is the surface, the normal for this particular part will be drawn like this, right? 90 degree. But for this particular surface, the 90 degree would look like this. The 90 degree would look like this, right? So look at the two 90 degrees. Now if I have parallel beam of light falling on it, look at the angle that it would make. This would make an angle like this, and this would make an angle like this. It is not going parallelly, right? So the angle of incidence will be equal to angle R. It is only that the surface is irregular. The image is not formed by irregular reflection, and image is formed by the regular reflection and is not formed by the irregular reflection. At least the clear image is not formed by a diffused reflection. So diffuse reflection is not due to the failure of the laws of reflection. That is, the laws of reflection hold true even in this case. It is caused by the irregularities in the reflecting surface, right? Since the particles are rough, the surface is not smooth, you cannot be assuming it to be reflected parallelly. That's all in today's video. This was the introduction to reflection part of light. We would come up with the second video on reflection by spherical mirrors. Stay tuned, and if you like the video, do like and subscribe. Thank you.